Hello. Welcome back to the Nifty City channel. Thank you for tuning in once again. आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले वी आर गोना डिस्कस निफ्टी। सेकेंडली वी आर गोना डिस्कस बैंक निफ्टी, जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं वो करने वाले हैं। Thirdly, I'm going to talk about 2-3 sectors which are looking very good for 2023 as a whole. And fourthly, we're going to be talking about एक amazing stock है जो हमारे दो अच्छे सेक्टर्स के बीच में फॉल करता है। ओके, सो वी गोना डिस्कस दैट। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, ये वीकली वीडियो है, सो काफी इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे टेक्निकल बेसिस पे। सो बेयर विथ मी, इफ यू आर हियर फॉर ओनली निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस देन आप वीडियो आधा देख सकते हैं। If you have not subscribed to the channel, my request to you is please subscribe to the channel, like the video, and you can also comment on how you like the analysis. Okay, so diving in, let's see what we have on the Nifty weekly charts, right? So Nifty weekly chart में क्या था? We were in a downtrend, ठीक है? वो डाउन ट्रेंड को हमने कन्वर्ट किया एक अप ट्रेंड में, एंड देन वी फेल। ओके, नाउ वन थिंग टू रिमेंबर इज दैट अगर मैं ये रीसेंट इम्पल्स पकड़ू, ठीक है, इधर के लो से इधर का हाई पकड़ू, तो वी हैव रिट्रेस्ड 50%. So there's nothing majorly to panic about, right? Despite FIIs, selling a lot, despite the US situation, despite everything, we have been resilient. The Indian markets have been resilient. We have retraced 50%. Now what we have here is we have a very strong base, ठीक है, जहाँ 4 बार अगर आप देखेंगे 4 वीक से, week 1, 2, 3, 4, 4 हफ्तों से हमने इधर सपोर्ट लिया है. इट इज अ वेरी वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट सपोर्ट. एग्जैक्ट में बोलूँ तो 17,775 या 17,800 आप पकड़ सकते हैं, राउंड फिगर. सो दिस इज द लेवल फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन सपोर्ट. नाउ ऑन द वीकली चार्ट, रिसेंट वीक में व्हाट डू वी हैव अ डोजी कैंडल, ठीक है, टिपिकल डोजी कैंडल है हमारे पास. दैट इज अ गुड फाइट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स. सेलर्स ने बहुत अटेम्प्ट किया 17,800 को ब्रेक करने के लिए, लेकिन ब्रेक नहीं हुआ है, एंड वी हैव stood above it, and Friday has been a good trending day. अब वो शॉर्ट कवरिंग है कि एक्चुअली में ट्रेंड चेंज होने वाला है वापस अपसाइड की तरफ, वी डोंट नो. लेट्स सी. नाउ लेट्स कम डाउन टू द डेली चार्ट. ओके, नाउ डेली चार्ट पे यू कैन सी एट दिस बेस व्हाट वी हैव हियर. ये बेस के ऊपर हमने एक बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल फॉर्म किया है. सो दिस इज ऑल्सो लुकिंग गुड, बट वट वी रिक्वायर इज वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस कंफ्यूजन जोन. ठीक है, ये जो एरिया है इसके ऊपर क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कंफर्मेशन. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द आर्ली टाइम फ्रेम. नाउ दिस इज योर आर्ली टाइम फ्रेम. ठीक है, अभी मैं जो लेवल्स हाइड करके रखे थे वो लेवल्स ओपन कर देता हूँ, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, नाउ दिस इज द आर्ली टाइम फ्रेम. नाउ शॉर्टर टाइम फ्रेम, आर्ली टाइम फ्रेम में व्हाट डू वी हैव? सो हियर वी वर इन अ गुड अबाउट रन. ठीक है, इधर आके हमने एक काइंड ऑफ डबल टॉप क्रिएट किया है 18,265 के पास. देन वी वेंट इनटू अ फ्री फॉल. इधर वी ट्राइड टू रिकवर, अगेन वी फेल डाउन, बट वी डिड नॉट ब्रेक आर लोज. ओके, ये जो लोज का एरिया है वी डिड नॉट ब्रेक. अगर ये लोज ब्रेक हो जाते देन द जर्नी टुवर्ड 17,400 500 के तरफ we could have gone, but we have not broken that. Now, what are the important levels for our intraday trading for the coming week? Right? Obviously, these levels are for Monday, Tuesday. Then, obviously, I'll be coming out. Monday को तो video नहीं हो पाएगा. I am traveling. But Tuesday को definitely we will come out with a follow-up video depending on the price action, how it is going. Now, coming down to the smaller time frame, अभी उसके पहले I'll just tell you the levels. So, initially we have अपना फ्राइडे का हाई. ओके, दैट इज रफली अराउंड 18,000 आप पकड़ सकते हैं, राउंड फिगर भी है. 18,000 के बाद वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ 18,127. ठीक है, जो मैंने ड्रॉ किया है. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल. नाउ व्हाई इज दिस एन इंपॉर्टेंट लेवल? आई टेल यू. एक तो हम फिबोनाची मार लेते हैं. ठीक है, हमारा जो रिसेंट हाई था टू रिसेंट लो, ठीक है, वो फिबोनाची के हिसाब से once we cross this level we will be comfortably above 61.8% retracement, which is ये डाउन ट्रेंड को नेगेट कर देगा. राइट, अब अगर मैं एक फिबोनाची ड्रॉ करूं, वन सेक, ये मैं पहले डिलीट कर देता हूं. अभी मैं एक फिबोनाची रिसेंट इंपल्स पे ड्रॉ करूं,
So right now we have closed at exactly 61.8%. Okay, so we touch that and we've closed somewhere here. So first important step 18,000 के ऊपर close करना. Second important step, why I'm saying 18,127, main reason being इधर हमारा recent swing था, ठीक है, ये एक recent swing point था, ये इसके ऊपर एक 200 EMA भी क्रॉसओवर हो जाएगा. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल 18,127. इसके ऊपर वी हैव आर एंटायर कंफ्यूजन एरिया का जो टॉप है 18,265. इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोज करेगा देन डेफिनेटली द कॉन्फिडेंस आएगा बुल्स में भी टू टेक आवर मार्केट हायर. ठीक है, 18,265 के ऊपर के लेवल्स में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. रफली इट विल बी अराउंड दिस लेवल 435 के आसपास. बट वी आर नॉट गोइंग देयर बिकॉज वी विल बी हैविंग वीडियोस ड्यूरिंग द वीक. So we will discuss. Okay, now mainly for Monday, what will our trading plan be? What is our trading action? So basically, if we open gap up, okay, now SGX Nifty has closed at 18,058. Okay, so let's say on Monday, if we gap up, so if we gap up somewhere in this range, then definitely 18,127 will be the first resistance point. So here we have to be cautious. As soon as we cross 18,127, then the target opens for 18,265. Okay, this is in any gap up scenario. Even in a gap up, if we hit this and we are retracing till 18,000, it is fine. If we break this, then a short trade can be triggered. If we open flat, then definitely first step will be above 18,000. We can look for a long trade till here. ठीक है, इतना सा हमारा जोन ओपन हो जाएगा. In case we fall down, this is going to be our support, major support, which I don't think we should hit now again. But if we hit this level, break this, then only short trade will be initiated. तो short trade के two possibilities are there. First possibility is 18,127 को hit करके if we fall below 18,000, that is possibility number one. Possibility number is two is कि flat खुले, थोड़ा gap down खुले and we break 17,774. That is the short possibility number two. Long possibilities में क्या है? We open flat, cross over this, then definitely long trade है. Or we open somewhere here and we retest this and move up, तो definitely long trade इधर है and then we can above this look for further targets, right? So this is all about Nifty and the game plan. Now let's quickly get into Bank Nifty. Okay, अब Bank Nifty में what do we have? We have the weekly charts on Bank Nifty. एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया था, राइट? इट वाज समवेयर लाइक दिस ट्रेंड लाइन. ये ट्रेंड लाइन के नीचे की क्लोजिंग आ गई थी हमारे पास. ओके, सो दिस इज वन वरिंग फैक्टर कि ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग आई है. बट important thing for Bank Nifty is कि HDFC Bank के results आए हैं. HDFC Bank has given a spectacular result. So it is definitely HDFC Bank is looking bullish, right? So I am assuming HDFC Bank is going to give a lot of support to Bank Nifty and Bank Nifty is already looking strong on the charts compared to Nifty. Nifty थोड़ा ज़्यादा correct हुआ है compared to Bank Nifty. Now, what is the important? So, important support area where we have again taken support here entirely is 41,569 to 41,840. Okay, this is the area where we have taken constant support in Bank Nifty. Very important area. Now, in terms of resistance, what do we have? We have this area of 42,716 to 42,904. Now, why this area? Let's go on to the 1 hour chart and check out. ओके, नाउ इफ आई कम हियर, ये जो हमारा स्विंग था इधर से लेके बॉटम तक फिबोनाची में मारू तो डेफिनेटली वी हैव समवेयर 61.8% एंड 50% रिट्रेसमेंट हियर. ओके, सो दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. Recent swing point also we have here, so that is another added point. And once we cross this, we will be crossing the 200 EMA as well. So this is a very important sector to place to cross 42,716 to 42,904. इस 42,900 के ऊपर definitely Bank Nifty is also going to be very very bullish, right? 15-minute chart पे देखते हैं and let's see what our trading plan can be for Bank Nifty. Now if you see here this level, Bank Nifty open is equal to high, okay, somewhere around 42,672 के आसपास. So here open was equal to high and then we had a very good fall in Bank Nifty. So now if we open somewhere flat, okay, तो ये कंजेशन एरिया के ऊपर हम निकल चुके हैं. ये कंजेशन एरिया के ऊपर हम निकले,
retest किया, वापस गए. So now if we open flat, okay, somewhere here we open flat, then definitely first long signal will be above yesterday's day high, that is Friday's day high के ऊपर long signal definitely until this point. Okay, ये एक target तो हमारा 42,700 का तो खुल ही जाएगा. So as soon as we cross, okay, somewhere around here 42,430 के आसपास, what is this level exactly, 42,455 के ऊपर 42,675, अराउंड 200 पॉइंट्स का तो टारगेट इजिली अचीवेबल है बैंक निफ्टी में. मोमेंट वी हिट दिस एरिया, okay, suppose we open flat, cross this, directly we hit this area, then I will be cautious here. Okay, here RSI will also go in overbought zone. Definitely either fresh long position nahi hoga. If we have bought somewhere here, then we can keep trailing our stop loss. Okay, 21 EMA if it's a trending day. Now on the downside, if we have a very big gap up, okay, somewhere we have gap up around here or here, then I will wait for the price to move a little bit up, retrace, and then go for longs. Okay. In case we open flat and we start moving down, then what is the area to start selling? Then definitely I will not look for short trades because ये कहीं से भी reverse हो सकता है. ठीक है, volatile है already market. I will not look for a short trade in Bank Nifty till the time this is not broken. Okay, 41,700 is not broken. I am not going to look for a short trade in Bank Nifty. Right now, what is this zone? This zone is 42,716 to 42,904. Now, this is all about Nifty and Bank Nifty. Right now, since it's a weekly video, we are also going to be discussing three sectors. Okay, three sectors that are looking very good on the charts. I'll explain why. So before we move into that, again, I'm telling you guys, if you have not subscribed to the channel, okay, because there are 93% of our viewers who are not subscribed to the channel. So please subscribe. Just hit that one button. It helps us a lot. Okay, motivate bhi karta hai kafi to come up with good videos like these for you guys. Right? So hit the subscribe button, hit the like button. Now moving on. So let's check out which sectors. So what we'll do is we'll quickly move on to the weekly charts. Okay, I have the sectors here. So first sector we're going to discuss is everyone's favorite, IT. Okay, अब IT sector में क्या था? Now we all know IT sector एक बहुत ही बढ़िया बुल रन में था. Okay, बहुत ही बढ़िया बुल रन में था. ये करेक्ट हुआ. ठीक है, कितना करेक्ट हुआ? लेट्स हैव अ लुक. सो ये बॉटम, ये टॉप. ठीक है, रफली हमने अराउंड 50% भी करेक्ट नहीं किया था. somewhere just above 50% तक का correction we have got in IT index. Now what happened in IT index is clearly we were in a downtrend. Okay, so overall uptrend है, uptrend के बीच में एक downtrend आया था, correction आया था. Here we made a high, again we went down, we made a lower high again. Now here we have formed a double bottom. Double bottom बनाया, previous high के ऊपर की closing दी और वापस एक छोटा impulse नीचे आ गया. This made everyone very nervous. Right now, why is IT looking like a good value zone? I'll tell you why. Number one reason is that we have our supports very close, 200 EMA with ये जो double bottom formation इधर हुआ है. So this area of 25,200 to 26,200, ये जो 1,000 point का ये area है, this is a very good support zone in Bank Nifty. ठीक है. Now please remember, whenever we are investing, okay, this is not from a FNO point of view. FNO point of view का stock I will discuss towards the end of the video. But when we're looking from an investing point of view, so there are two types of investors. एक होते हैं वैल्यू इन्वेस्टर्स जो बहुत ही बीटन डाउन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं विच आर स्टिल फंडामेंटली गुड. एक होता है मोमेंटम इन्वेस्टर्स जिनको प्राइस में मोमेंटम चाहिए, जब वो एक नया हाई बना रहा हो तभी एंट्री करता है, नॉट व्हेन द स्टॉक इज बीटन डाउन. This sector IT is a value investment right now. Okay, it is not an investment where there's massive momentum in IT. 2023 में still there can be trouble in IT, but from an investing point of view, if you're looking for the long term, IT will be a very good sector to invest in right now. Okay, so as per charts, we have made a lower high here. First step will be to reclaim the 50 EMA, इसके ऊपर की closing. Second step will be इसके हाई के ऊपर जैसे ही क्लोज करता है, then we will see momentum in IT. Okay, IT as a sector as a whole. Now the second sector, okay, which is momentum, is metal. Okay, now
Technically, we will discuss. Fundamentally also, China reopening is playing a major role in metals. So you will see all metal stocks performing. In recent days also, they have performed very well. Now, what do we have in metal? Now, metal again, after quite a long consolidation, okay, we had a long consolidation in metal. Uske baad, post COVID, we got a breakout, nice retest. Again, we are back to the highs. Okay, now if I zoom this in a bit, now this is the level that was a top in metal. Okay, major resistance था. अब उसके ऊपर की closing we have received. So this is very important in metal. Nicely 21 EMA पे support भी लिया है. Okay, RSI is still not nowhere close to overbought right now. So all the factors are good in metal. Now, what are the targets we can see? Now, that is a different issue altogether. Targets अगर आपको चाहिए. Now, if I draw एकदम bottom से Fibonacci, this is एकदम long term के लिए if I talk, then your targets will be 82799038. Okay, these will be your targets. So, lot of upside room left for metals as a sector, looking good. If this breakout sustains, then damn good. What will be the stop loss? Stop loss will be simple. This ये जो इधर 21 EMA पे जो सपोर्ट लिया था, दिस इज गोइंग टू बी अ स्टॉप लॉस. ओके, सो यू कैन सी रिस्क रिवॉर्ड वाइज 800 ऑड पॉइंट्स का रिस्क है, एंड अपसाइड के लिए मोर देन 2400 पॉइंट्स 1:3 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड है मेटल्स सेक्टर में. नाउ ऑब्वियसली यू गाइज विल बी थिंकिंग कि सेक्टर थोड़ी ना हम ट्रेड कर सकते हैं. सो विच आर द स्टॉक्स दैट वी कैन ट्रेड, वी विल डिस्कस. उसके पहले वन लास्ट सेक्टर वी हैव, दिस इज PSE. Okay, now this has not given a breakout yet, but it is looking very good. So we had one resistance here, second time it took here, third time it took here, now fourth time it is trying to break out. मेरे हिसाब से this is going to give a breakout, PSE sector. So now as a combination of PSE and metals, we have one stock that fits in both these sectors. Okay, तो metals जिसने already breakout दिया है and PSE जो breakout देने वाला है, ये दो सेक्टर्स के ऊपर वी हैव अ स्टॉक कॉल्ड सेल, स्टील अथॉरिटी. ओके, इसका चार्ट एक बार देख लेते हैं. नाउ इसके चार्ट में व्हाट डू वी हैव? ओके, नाउ लेट मी शो यू गाइस द मंथली चार्ट फर्स्ट. ओके, नाउ दिस इज द मंथली चार्ट. नाउ इफ यू सी द मंथली चार्ट ऑफ सेल, here we had a very लंबा consolidation. Okay, when I say लंबा consolidation, monthly chart है ये, right from 2011. Okay, 2011 से लेके 2020 तक, कोविड तक, we had this big consolidation. Now in COVID, after the COVID खत्म हो गया, उसके बाद ये जो लेवल था इसके ऊपर हमने ब्रेकआउट दिया था इधर सेल में. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी ऑलमोस्ट अ डेकेड लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद हमने ब्रेकआउट दिया है. ब्रेकआउट के बाद ये आया नीचे रीटेस्ट करने. अब रीटेस्ट कर चुका है ये. नाउ वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट लेवल्स. सो दिस वाज द मंथली ओवरव्यू. नाउ कमिंग बैक टू वीकली, what do we have on the weekly charts? Okay, so like I said, this was the one of the major resistances, that is 101.45. Okay, now when I break it down to lower time frames, okay, now we have the daily time frame here. Now on the daily time frame, what do we have? You can see we have this resistance of 89.70. Okay, so again and again we have found supply here in sale. So when will our entry be triggered? Entry will be triggered on breakout of 89.70. Right? What is the stop loss? Stop loss will be this candle ka low, which is 87.20. So 89.70 के ऊपर entry है, 87.20 stop loss. Okay, 87 मान लो आप stop loss है. Right? So roughly 3 रुपए का stop loss है. आर्ली चार्ट पे जाते हैं. ना आर्ली चार्ट पे देयर इज दिस ट्रेंड दैट इट इज फॉलोइंग. ओके, तो ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है विथ multiple supports, touch points, almost 4 touch points we have in sale here. So you can see this is the ceiling. Okay, this is the ceiling that we have, and here. Okay, so this is some kind of a pattern that we are following here. So if you guys know the name of the pattern, please comment. This is your homework right now. Which pattern is this? Okay, now when we have a breakout above this 89.70, what are our targets? Okay, so obviously first target that we've got
Okay, this is not a short term target, this is a long term target that we have is 101.45, and uske upar ke targets if we want, then we can definitely look at the weekly chart. Uske upar ka will be this swing point, roughly 111.25. Okay, so these are the 2-3 targets that we have on sale. Metal as a sector is looking good. Budget bhi aa raha hai. Definitely that will also give an impulse to metal. So metal as a sector is looking good. PSE as a sector is looking good. IT is looking good in a value buy, right? बाकी HDFC बैंक के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं. निफ्टी बैंक निफ्टी में माय बायस इज टुवर्ड्स द अपसाइड, बट वी हैव टू बी केयरफुल. 18265 या 18300 के ऊपर की क्लोजिंग विल कंफर्म द बुल रन. उसके पहले डोंट गो ऑल आउट. ठीक है, इट कैन बी दैट हम वापस एक रेंज बाउंड मूवमेंट भी कर सकते हैं. 18300 से लेके 18000 के बीच में थोड़ा जिगजैग कर सकते हैं. सो डोंट गो ऑल आउट टिल 18300 के ऊपर की क्लोजिंग ना मिले. Right, guys? All the very best for tomorrow. We have our free Telegram channel. Description is there below. We have our premium channel with very low subscription fees. Premium channel pay also I share the trades that I take. I give running commentary on what I feel about the market, about the intraday data that is developing. So all these factors are there. So do check it out. Everything is in the description. All the very best for trading on Monday and the coming week. Bye. Take care, guys.